कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ, नाम वापिस ले लेता हूं। Completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Shri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. Seek, and if it is proved, I will resign. Mallikarjun Kharge ji, what is this? Please. You want to speak? You speak. कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या सर, यही नहीं सर, मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ, मैं बोल दिया सर। ऐसा गिवन द डिसीजन, निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर, इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। ऑथेंटिकेट सर, आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज सर, वी आर रूल कौन सा रूल में बोल रहे हैं आप? to sir, 352. while a member is speaking to him of the नाम डिलीट कर दिया, बताइए sir हमने कैसे नहीं नो एक मिनट, आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक एक मिनट। वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए, प्लीज बी सीटेड, ऑल मेंबर्स प्लीज सीटेड। Sir, while he is speaking, he is totally misled the House. Not only misleading the House, he took the name of Honorable Leader of Opposition of Rajya Sabha here in a very bad way. We are really proud, sir. We are really proud of that. We are having a Congress president who came from the grassroots level of this country. Okay. With so much favor. He didn't like Mallikarjun Kharge ji because he is leading by his casteism. ओके, थैंक यू प्लीज कंटिन्यू सर। आज प्लीज माननीय सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर, मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। Thank you, sir. I am grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles
and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Deve Gowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in Parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I have long way, and Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you have made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवे गौड़ा जी यहाँ है. अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी. चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे. ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा. मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं. ये याद रखो, डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं. और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं. 1,20,000 एक ही सेगमेंट से. और मुझे ये लगाते हो, Confined to the point, sir. और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ. अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं. One second, on जात नहीं बोलता. Leader of the opposition, please, sir. You have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. Honorable members,
one second. One second. You see, when leader of the opposition, president of the Congress party, has made observations expressing his deep anguish, I would allow, you want to say something? And then I would react from the chair. Chairman, sir, we heard the anguish and the words expressed by the Honorable Leader of the Opposition. I have stated earlier also, as a colleague, we must have high regard for each other. And Mallikarjun Kharge ji, what is this? Please, please. You want to speak? You speak. Honorable members, 1 second. Honorable speak. members. Let this Derek O'Brien speak. Honorable members. 1 You second. speak on behalf of me. You speak. Honorable members. Let him speak. A little while What ago. right he has to make One second. this kind of comment? 1 second. 1 second. Little while ago, I had the occasion to pay salutations to this august house because it was on this day we came into being. The leader of the opposition was heard in rapt attention. Let the other point of view come, and then there's a chair to take a call on this. Let me take the call. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.